Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. Let us for now navigate through this question, and this is going to be a mix of electrostatics and mechanics. And here basically we are talking about minimum velocity that should be given to the bob at the bottom so that it can complete the vertical circle. So हमने पहले भी किया है, mechanics में किया है ना? When I mean there is this pendulum sort of thing, and if it has to complete vertical circle at the bottom we give it certain velocity. And what is the condition? जैसे देखो अगर ये एक काम करते इसको simply point of suspension से ऐसे दिखाते, ठीक है? So as it will go up, what will happen? जैसे यहाँ पे जनरल कंडीशन में लेती हूँ. So here tension is acting like this is your mg, and if this angle is theta, I mean this angle will be theta. So mg will have one component in this direction, mg cos theta, and another is your mg sin theta, which is basically acting down the trajectory, which is trying to basically retard the motion of this ball, or you can say it is trying to decrease the velocity of this ball. Okay, and what is this t and mg cos theta doing? It is providing it with required centripetal force in order to go round in this circle. So t minus mg cos theta को आप क्या लिखोगे? If velocity is v at this point, then you will say t minus mg cos theta, that is net force acting towards the center, mv square by r. And if you see here, T will be equal to how much? Mg cos theta plus mv square by r. So you can clearly see here one thing, that theta is increasing as it is going up. So if theta is increasing, cos theta is decreasing. Okay. And in short, you can say that tension thing is decreasing. है ना, क्योंकि वेलोसिटी भी घट रही है, थीटा भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ये टर्म तुम्हारा क्या हो रहा है, घट रहा है. सो टेंशन इज डिक्रीजिंग. सो टेंशन का मैक्सिमम डिक्रीज होने का चांस कहाँ है? जहां पे तुम्हारा कॉस थीटा मिनिमम होगा, दैट इज -1. ओके, सो एम वी स्क्वायर माइनस एम जी कॉस थीटा. सो एट द टॉप पॉइंट, व्हेन दिस पेंडुलम इज एट द टॉप पॉइंट, सबसे ज्यादा खतरा यही है कि यहाँ पे तुम्हारा टेंशन जीरो हो सकता है. सो अगर यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाता है, done it, because I mean if it happens here, let's say, then this string will become loose, or agar ye loose hota hai, then this ball will feel like it is free in the environment, and in that case gravity will pull it down, so it will come down like this, it won't go into circle like this. So in that case it won't be able to complete the circle. Done it. So agar tumhara tension zero hota hai but somehow it has certain velocity left, so if it has certain velocity left, then this mg will get consumed in providing it required centripetal force. क्योंकि देखो अगर इसके पास velocity है at the top, it requires force mv square by r. Okay, and that can get provided by mg. So if v value is equal to root under rg, in that case, I mean this will be what? This will be able to complete the circle. क्योंकि उस केस में mg से down drop नहीं करेगा, it will get consumed in providing required centripetal force. Okay, so this is the case. कहने का मतलब ये है कि अगर टेंशन जीरो होता है, इट शुड हैव वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, और अगर तुम्हारा टेंशन जीरो नहीं होता है, and in that case even if velocity is zero, it will be able to go this way. Why? Because of the inertia of motion. जैसे देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, just before the top point it is in motion, at the top point it is coming to rest, but because of inertia of motion it will get pushed to this side, and once it gets pushed to this side, even by little amount towards the left of this highest point, it will be completing the circle, क्योंकि उसके बाद देखो ग्रेविटी उसको अपने आप नीचे की तरफ खींच लेगा ऐसे. ओके, सो दिस इज द थिंग. यानी कि तुम्हें इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि व्हेन यू आर आई मीन व्हेन यू वांट इट टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल एट द टॉप पॉइंट, इफ टेंशन हैज टेंडेंसी टू get zero, in that case at the top point it should have velocity equal to root under rg. That should be the case. Okay, और अगर टेंशन जीरो नहीं होता है तो वेलोसिटी जीरो भी है तो चलेगा, यानी कि u मिनिमम आप इस तरह से दोगे such that at the top point velocity is zero. Okay, so we will keep this thing in our mind while solving this question. Now let us read the question. A simple pendulum has length L, bob of the pendulum has mass m and carries a charge q. A point charge q is fixed at the point of suspension. So at the point of suspension there is charge q. Find the minimum speed of projection at the lowest point so that pendulum bob completes the vertical circle. अब देखो complete the vertical circle के लिए dangerous position यही है, so हम इस position की ही बात करेंगे. Okay, so at this point what are the forces acting? Tension always acts away, so this is this. mg always acts down, so this is this. And then I mean electrostatic force की आप बात कर लो, this is plus q.
और यहाँ पे भी इसके पास प्लस चार्ज है। सो दिस प्लस क्यू विल रिपेल दिस बॉब, ओके। सो रिपेल करने का मतलब इधर की तरफ फोर्स देगा एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स के क्यू क्यू बाई एल, ओके। सो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट केस के लिए निकाल लो। सो के का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एंड दिस इज क्यू एंड के का वैल्यू क्या है, सॉरी कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल का स्क्वायर एम जी बाई क्यू, okay. So okay, force is L square, right? So this is L square and this is your L square. So this will get cancelled. 4 pi epsilon naught से देखो ये 2 times में cancel होगा. This is Q Q. So this is equal to 2 mg. अब आप ध्यान से देखो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 2 mg. Okay, so upward force is 2 mg, downward force is t plus mg. So what is the upward force at this point? I mean net upward force अगर आप tension को leave कर दो, then you can, I mean let us redraw the bob. We can see clearly here it has force acting mg in this sense, and then there is this tension. So there is something upward which is trying to, there is some upward force which is trying to take it, I mean outward in this case. Okay, but it cannot take it क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा string क्या है, suspended है, fixed है at this point. So basically this mg will maintain tension in the string. So tension cannot get zero in this case. ओके okay? इस केस में तुम्हारा क्या है, टेंशन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आप इमेजिन करो अगर ये स्ट्रिंग है ऐसे हैंग है, then mg is acting downward and this is actually trying to stretch the string, so it is maintaining tension in the string, there will be tension. Similarly here mg is trying to apply a force in the upward case, okay. So there will be tension in the string, okay. So tension cannot get zero in this case, okay. So yeah, tension cannot get zero क्योंकि देखो जो भी फोर्स खींचने का काम कर रहा है ना, एक्सटेंड करने का काम कर रहा है, दैट विल जनरेट टेंशन, ओके। और अपवर्ड केस में अगर तुम्हारा टेंशन, आई मीन अगर बॉब ऐसा है और एमजी ऐसा लग रहा है, तो दिस एमजी इज नॉट ट्राइंग टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग, ओके। सो ये स्ट्रिंग को टेंशन में लाने की कोशिश नहीं कर रहा, एंड इन दैट केस दिस mg इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग टेंशन, ओके। सो इसलिए अगर तुम्हारा mg डाउन ऐसे लग रहा होता और टेंशन होता, सो टेंशन हैज चांस ऑफ बिकमिंग जीरो एट द टॉप पॉइंट, डन है। सो दैट केस वुड हैव बीन डिफरेंट, बट यहाँ पे हमारा mg बैलेंस, आई मीन डाउन वाला mg कैंसिल हो गया है बिकॉज अपवर्ड 2 mg फोर्स था. सो नेट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन 2 mg एंड सो सॉरी net force is mg in the upward sense and that will generate tension, so tension cannot get zero. और अगर टेंशन जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, एट द टॉप पॉइंट दिस बॉब कैन हैव जीरो वेलोसिटी, डन है. सो वी विल से दैट इन दिस केस एट द टॉप पॉइंट दिस बॉब कैन हैव जीरो वेलोसिटी, इन दैट केस ऑल्सो इट विल गो दिस साइड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके. सो या यानी कि यहाँ पे v जीरो हो सकता है. चलो बॉटम पे हमने कितनी वेलोसिटी दी, u दिया. So, I mean, just do the energy conservation. So at this point, let us take this as the reference height 0. Okay, so at this point, kinetic energy is only there, half mu square. And at the top point, there is no kinetic energy. There is only gravitational potential energy. And that is equal to 2L into mg. 2L is the height, okay? So mgh. And you may be thinking about इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट रह रहा है ना, क्योंकि इस पोजीशन में भी दैट इज के क्यू क्यू बाई एल एंड एट दिस पोजीशन ऑल्सो दिस इज के क्यू क्यू बाई एल. सो बेसिकली इनिशियली भी आप लिखोगे के क्यू क्यू बाई एल एंड हियर ऑल्सो इट इज के क्यू क्यू बाई एल. सो सिंस दिस इज नॉट चेंजिंग इट विल गेट कैंसल. सो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं. So u square will be equal to how much, 4gl, and u is equal to root under 4g. So minimum velocity will be this one. ऐसे भी आप मैकेनिक्स याद करो, आपको याद होगा रॉड के केस में वी वर गिविंग दिस मच मिनिमम वेलोसिटी इन ऑर्डर फॉर बॉब टू कंप्लीट द होल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, राइट. जब तुम्हारा बॉब किससे हैंग था, रॉड से, क्योंकि रॉड में टेंशन जीरो नहीं हो सकता because of its construction and everything. So rod के केस में I mean we were giving this much minimum velocity at the bottom. Again concept was similar. Okay. Now let us navigate through the second case. Second case में देखो तुम्हारा जो electrostatic force लग रहा है that is how much, क्योंकि that is the key point here. So QE, I mean electrostatic force आप निकालो 1/4 pi epsilon naught K QQ. So Q into Q is 2 pi epsilon naught L square mg by Q divided by L ka square. So L square will get cancelled, Q will get cancelled, and this 2 pi epsilon naught with 2 will get cancelled, and this is mg by 2. Now this is interesting. अब देखो हमें टॉप पोजीशन को ही एक्सप्लोर करना है बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहां से
खतरा है कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो सकता है। डन है। सो लेट अस सी नाउ। So at this point, mg by 2 force is acting in this case, in this direction. mg gravitational force downward and tension like this. अब आप ध्यान से देखो, mg by 2 with mg will get cut. Okay, so how much is the net force acting? अगर आप देखो यहाँ पे बॉब है, so net downward force is your mg by 2. Will there be tension? There is high chance there won't be tension, क्योंकि देखो there is no force which is trying to generate tension in this case, and at the highest point, in order for minimum velocity to be given at the bottom, there is a chance that tension will become zero. So I mean here tension can become zero. Okay, so tension zero का case लेकर चलेंगे, and in this case if it has to complete the vertical circle, at this point it should be having velocity. ठीक है, so let's say it is having minimum velocity v minimum. Again, don't put root under gr, क्योंकि that is for the case where electrostatic force was not there. So downward there was force acting equal to mg. Here it is mg by 2. So please don't do that one. Okay, so I mean at the top, let us say velocity left is v. Okay, so this is v. Now what we can do, I mean here this mg by 2 force is getting consumed in providing centripetal force. So you will write that mg by 2 is equal to mv square by r. Okay, so that is L. M will get cancelled and V square is equal to GL by 2. Now let us use the energy conservation. So at this point, I mean, what was the energy? Half mu square, and this is the reference line for H equal to 0, gravitational potential energy 0. Electrostatic potential energy को मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि that is not changing with time. Okay, so at any position that is same, so I'm just dropping that out. Half mu square equal to, at the top point, what is the velocity? Half m and v ka square, that is your gl by 2, and then what is gravitational potential energy? Mg into height, that is 2l. So this is this much. Now how much will be this thing? Mgl by 4 plus 2 mgl, so that is your 9 mgl by 2. So this is your half mu square. Now m will get cancelled and 2 will get, okay, here it is 4, right? So yeah, 2 say 2, this thing will get cancelled, and this is your how much? 9 gl by 2. So this is equal to 4.5 gl. Okay, so what should be the minimum velocity given at the bottom? That is your 4.5 gl. Okay, so this is the concept, and here we can easily conserve energy because there is only conservative force acting. That is your electrostatic force and gravitational force, जिसके इन्फ्लुएंस में तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा. आप कहोगे मैम टेंशन भी तो लग रहा है, लेकिन टेंशन कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमेशा ऐसा होता है सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. सो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, सो वी डोंट नीड टू इंक्लूड दैट. Okay, so yeah, this is the thing. I hope you've understood this question, but I mean, if you have any doubt anyway, you can always let me know in the comment section. But before I leave, I will just revise things for you. जैसे देखो, मैंने बस ये किया कि जब तुम्हारा बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी देना होता है सच दैट इट विल कंप्लीट द सर्कल, देन एट द टॉप पॉइंट, आई मीन नॉर्मल जो हमने सीखा है, अगर टॉप पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि इस पे सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, then tension will become zero at this case for you to be minimum at the bottom. Okay, so if tension will become zero, since this is a thread, at this point it should have some minimum velocity, some velocity left, and that velocity will do what? It will consume this downward force acting to provide this bob with required centripetal force. This is the thing. और अगर तुम्हारा टॉप पॉइंट पे तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि इस पे कुछ अप जैसा फोर्स लग रहा है, टेंशन वॉन्ट गेट जीरो. और अगर टेंशन जीरो नहीं होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, दिस विल सिंपली गो दिस साइड बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. बिकॉज ये स्ट्रिंग लूज नहीं हुआ है, अगर लूज नहीं हुआ है तो mg वॉन्ट टेक इट डाउन. Okay, so because of inertia of motion, it will just get shifted towards the left, and once it gets shifted towards the left by even a small amount, it will come down to complete the circle under the influence of gravitational force. Okay, so normally this is the case. I hope you have got it. Okay, so yeah, take care of yourself. Bye bye.